वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे एक यूएस सीएमए कन्वेंशन प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 200-300 स्टूडेंट्स। और आज काफ़ी स्पेशल दिन है क्योंकि एज अ गेस्ट आई बी सिटिंग विथ इंडिया लेवल लीडर्स ऑफ आईएमए। जिनको नहीं पता, आईएमए स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ये एक यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो सीएमए ऑफर करती है इंडिया में। सो sharing stage with them, getting to share my advice with students, I think it's an absolute privilege और काफ़ी excited हूँ। I'm good. How are you? Very good. How is the traffic? I know it's killer. It's messed up today in Pune. Hi. Hey man, Aditya, how How are you? I'm good. How are you? Good. Yes, all good. I'll be delivering a speech after a long time. देखते हैं। You will do it for sure. अरे You will do नहीं, it for sure. I watch your every video. You also know that. Let me ask you all, how are you doing? By the way, थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ. I am a TV presenter, I am an anchor, I am an MC, and I love talking to my audience. I'm coming from Bombay, by the way, and I'm here to make sure that you all have a fantastic evening. But that can only happen if we have a two-way communication. So let me ask you, are you ready for tonight? All right, time for me to invite a dynamic professional who is immersed in finance, strategy, and sustainability and more. With an MBA from IIM Lucknow and certifications in FRM and USCMA, he has 4 years of experience, notably at Deutsche Bank in credit risk analytics and strategic financial management. मैं किसकी बात कर रही हूँ? Huh? Let's see. Let's welcome Mr. Aditya sir on the stage, everybody. Can we please do a huge round? Okay, this is nothing less than a concert, I must say. भाई साहब, क्या starting थी? A huge round of applause for Unique team. I think they are doing amazing. Okay. आपको जैसे सुना ही होगा कि USCMA खत्म किया है, FRM हुआ है, and I have around 4 years of a very diversified experience. I have believed in like hard hustle throughout my life. So start किया था Deutsche Bank के साथ. Then I moved on to FIS, which was a Fortune 500 company. उसके बाद Silicon Valley startup के साथ, and then lastly I also worked with a VC based out of Singapore. MBA के बाद अभी I'm working with KPMG as a consultant. I'll give you 2 options now. एक है कि मैं आपको मेरे करियर स्टोरी का थोड़ा सा ग्लिम्स दे सकता हूँ, which by the way you can watch on YouTube as well. और second option है कि I can give you some really effective advice that can potentially change your life. So किसको किसको advice सुनना है? Can you raise your hand? Okay, cool. So after college यार, I'll be very honest, मैंने commerce side choose किया था and I wasn't that creative. लेकिन जैसे हमारे host ने कहा है कि life में कुछ उखाड़ना है, मुझे भी कुछ उखाड़ना था. So I thought, okay, let's do one thing. Let's study all the smart people around me. So after studying these folks, there are 5 things I've come across which can be built over time and can be monetized effectively. And I was like, ठीक है, ये 5 चीज़ें drill down करते हैं. अगर आपके पास notebook हो, कुछ भी हो, शायद लिख लेना. ये 5 चीज़ें काफ़ी useful रहेंगी आपको. The first thing you can work on is the knowledge part. Knowledge and information. The second thing is the skill part. This forms the fundamental of your career. और उसके बाद 3 interesting चीज़ें आती है. Next one is branding. Then comes resources. And last, any guesses? I think Pranesh mentioned it. Networking. अभी interesting चीज़ इन तीनों के बारे में है कि ये 3 है ना, fade out हो सकते हैं. You can lose touch with people. Network कम हो सकता है. You can lose your reputation. शायद आपका ब्रांड फेड हो सकता है. यू कैन रन आउट ऑफ रिसोर्सेज, बट नॉलेज एंड स्किल
no one can take it away from you. अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, I completed CMA when I was 21 years old. And now I get to encash it for rest of my life. By the time I retire, 40 hopefully, or else 50 as usual. And that is the advantage a student gets. And so I'm really glad कि मैं आज student से बात कर रहा हूँ, because मैं जब कुछ सालों पहले पढ़ाता था, तब most of the professionals were working professionals. So their encashment time, their growth period was quite limited. और ये USCMA in my experience fills up two gaps. एक गैप रहता है कि आप जब कैंपस से कॉर्पोरेट जाते हो, देयर इज अ ह्यूज गैप इन द सिस्टम. अनफॉर्चुनेटली, होपफुली NEP के बाद, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद वो फिल हो जाए, बट आई एम क्वाइट श्योर वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना जब इंडस्ट्री लीडर्स बैठ के आपका करिकुलम बनाते हैं. एंड दैट इज व्हाट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ब्रिंग टू द टेबल. सो वो एक गैप. एंड सेकेंड गैप इज व्हेन यू स्टार्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एनालिस्ट और एसोसिएट टू CFO लेवल. ये दूसरी गैप है जो आपको शायद सर्टिफिकेशन हेल्प कर सकता है जल्द से जल्द अचीव करने में. आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जब मैं डॉयश बैंक से FIS में मूव हुआ था, FIS इज अ फॉर्च्यून 500 IT कंपनी. अभी फाइनेंस प्रोफेशनल वहाँ पे क्या कर रहा था? सो हर एक बैंक में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज होता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होता है. और जब ये सॉफ्टवेयर कोडर्स को बनाना होता है, दे हैव जीरो क्लू कि फाइनेंस क्या होता है. एक बार तो एक बंदे ने आके पूछा था, यार ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? फॉर देम टू अंडरस्टैंड हाउ अ सॉफ्टवेयर वर्क्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेट्स से योर क्लाइंट. आई वाज मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट बैंक्स फॉर आवर कंपनी FIS. तो तभी द फाइनेंस पार्ट केम इनटू पिक्चर, बट वहाँ पे पूरा रिस्क का पार्ट था. बट इंटरेस्टिंगली 1.5 साल के बाद मेरा प्रमोशन हुआ था. एंड एज सुन एज आई गॉट प्रमोटेड, आई गॉट 5 पीपल टू मैनेज. ये काम अब वो करेंगे, भाई मैं तो मैनेज करूँगा. But another interesting part was when we started planning on how the budget should look like for the project, how things should be managed, I suddenly realized कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने CMA में कर चुका हूँ. तो तभी मैंने मैनेजर को बोला कि यार अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. तो वहाँ से फिर I got to know कि it's really great to have as many, जैसे सर बोल रहे, जितने शस्त्र आपके पास है, believe me, you can, when you have combination of certifications, you can sit at any table. Table of an investment bank where finance is being discussed. Table of a manufacturing firm, वहाँ पे capital manage is being discussed. ऐसे कई सारे टेबल है जहाँ पे आप आराम से फिट हो जाओगे, अपना इनपुट दे पाओगे, and you can make a mark in your life. So having said this, all the best. ये आपका built up phase है. Please double down on this, and all the best for your career ahead. That's it. I would like to call Sukrit sir on the stage to do the honor. Alright. Thank you so much, sir, for your time and your wisdom and coming today and sharing it with all of us. I think it's time to question sessions. प्रणेश पैनल, आई थिंक मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन तो जायज़ होगा. सर आपने इतना सब बता दिया, CMA के बारे में सब कुछ बोल दिया, एंड लेकिन जॉब कहाँ मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा? Yep. So being a Punekar, I would say, I'll take the privilege of adding few examples. I think the faculty has told you that there are two parts. But the interesting part is both parts have a very different objective. Part one gets you ready for the accounting, reporting, costing world, while part two makes you ready for the investment management world, the stock market part, M&A, other stuff. And to give you a very real life examples, I have so many friends who have got into companies like Northern Trust, which officially acknowledges what kind of course CMA is. And I have seen even a fresher getting into a directly senior analyst role, not just analyst, while joining the company. The company where I used to work, Deutsche Bank, even they acknowledge this as a professional course. Interestingly, 2 weeks ago, and again, going back to the reference of India versus world, I think one of the faculty member gave you a reference. I work in KPMG. KPMG US right now is going through a layoff, but KPMG Global in India is hiring. And when a hiring manager comes up to the podium and says, hey, we are planning to hire
preferably CPAs, CMAs, and ACCAs of the world. This is where the spotlight gets on you. So you have big six for sure, big four plus BDO and Grant Thornton. And then you have other companies which are investment banks, companies like Eaton. Akshay is from Eaton. Then we have, I think, Krutika, who is from Northern Trust. So all the IMA board members, you can just check in which companies they are working, and that's an open door for you, along with a ready referral. But this compliance and governance, these two words I've been hearing a lot. So if you, in the India scenario, we've been talking about compliance, and from the global scenario, we're talking about governance. So can you throw some light on this from the industry perspective? Thank you. So I'll explain you with a very beautiful example. And this is what I literally do every day in KPMG. So I'm a consultant, I'm a buy-side consultant, so working in the UK market. So whenever any investing party is planning to acquire a company, they knock on doors of firms which are CMAs, CS. And after knocking, they say, hey, we are acquiring XYZ company. Can you do a complete compliance, due diligence, audit check before we go and pay them up? Because it will cost us. So while doing this due diligence, there are different teams working on it. And one team, which is compliance, that goes into real depths on what kind of rules, regulations you have to comply with in that specific industry, and which are a lot. And for this, while presenting the facts back to the investor, while presenting the financial impact in this context, we need professionals like CMAs or a combination of CS and CMAs to take care of such work. हाय तो व्लॉग खत्म होने से पहले दो क्विक डिस्क्लेमर्स. फर्स्ट वन, इस व्लॉग में मैं जिस इंस्टीट्यूट के साथ था, मैं उस इंस्टीट्यूट के साथ ऑफिशियली एसोसिएट नहीं हो रहा हूँ. आई एम नॉट जॉइनिंग देम एज अ फैकल्टी और इन एनी कैपेसिटी. मुझे कई सारे स्टूडेंट्स और इवन competing कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्वेरीज आई थी कि हे आदित्य, आर यू जॉइनिंग देम, आर यू एसोसिएटिंग विद देम. सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट आउट. एंड सेकेंडली, नॉट अ डिस्क्लेमर बट रादर अ सरप्राइज, आप देख ही रहे हो कि हम हमारी यूट्यूब फैमिली काफ़ी स्टेबली, सस्टेनेबली और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. एंड नाउ वी आर अबाउट टू क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर, विच इज़ आवर फर्स्ट बिग माइलस्टोन. एंड एज अ सरप्राइज, we will be launching a podcast show for you which will be named as Level Up Podcast. ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी once we cross 1000 subscribers, but सोचा कि इस ब्लॉग के एंड में थोड़ा सा आपको टीजर दे दूं. हमारा फर्स्ट सीजन इज लाइंड अप ऑन द थीम लाइफ एंड टीचिंग्स. सो आई हैव अमेजिंग पैनल लाइंड अप जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल दे हैड टू गो थ्रू और आज वो किस मुकाम पे पहुंचे हैं. एंड आई होप दैट विल बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. सो डू लुक आउट फॉर दिस स्पेस. एंड लास्टली, thank you so much for watching this vlog. Don't forget to like, share and subscribe. As usual, I'll see you in the next video. Thank you.